Hello friends, welcome to my channel with a new art tutorial. So friends, in this video I will teach you how to draw hair and beards by using graphite pencils. So friends, हमें इसके लिए कुछ डार्क एंड कुछ लाइट पेंसिल्स चाहिए होंगी. सो मैं डार्क एरियाज़ के लिए 10B एंड 6B यूज़ करूँगा. आप चाहे तो इसकी जगह 8B यूज़ कर सकते हैं, वो और बेटर होगा, बट मैं 10B यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मैं 6B यूज़ करूँगा. एंड लाइट एरियाज़ के लिए मैं 4B यूज़ करूँगा. और ब्लेंडिंग के लिए मैं सिंपल मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ. सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बाय यूजिंग 4B पेंसिल विथ लाइट प्रेशर. I was looking into darkness for something to hold on. Found you when you were so broken. Felt something was wrong. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Ooh, I'm in love with you. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. अब हम इस कॉम्पास का यूज़ करके हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाएंगे. आप कॉम्पास की जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बस वो थोड़ा फोक टाइप होना चाहिए. तो जैसा कि आप रेफरेंस में देख सकते हैं, इस हाईलाइट की जगह पे हमें स्ट्रोक्स लगाना है. सेम जैसा रेफरेंस में है वैसा ही ऑन पेपर हमें ड्रॉ करना है.
हम लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे लाइट प्रेशर के साथ एंड स्ट्रोक्स हेयर के डायरेक्शन में होने चाहिए। नाउ आई एम यूजिंग 10B पेंसिल फॉर डार्क वैल्यूज़। जैसा हमने पहले किया था सेम फिर से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाएंगे एंड जहाँ डार्क है वहाँ प्रेशर का अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप रेफरेंस में देख सकते हैं सेम वैसा ही करना है। अब हम इसे ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लेंगे एंड फिर से पेंसिल अप्लाई करेंगे डार्क वैल्यूज़ के लिए। बस सेम रूल को फॉलो करना है एंड लेयर बाय लेयर स्ट्रोक्स लगाना है देन ब्लेंड करना है उसे। यहाँ पे थोड़े थोड़े से हेयर्स हैं इसीलिए मैं यहाँ पे पेंसिल डॉट्स का यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग मैकेनिकल पेंसिल।
अब मैं हेयर्स की साइड में फाइन लाइन्स अप्लाई कर रहा हूँ। इससे हेयर में रियलिस्टिक लुक आता है। Something to hold on. Found you when you were so broken. Felt something was wrong. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Ooh, I'm in love with you. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. सो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बियर्ड्स बहुत डार्क हैं, सो मैं फर्स्ट लेयर के लिए ही 10B and 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, बियर्ड्स में भी सेम रूल्स को फॉलो करेंगे। पहले सही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स को लगाना है, फिर ब्लेंड करना है, एंड फिर स्ट्रोक्स को लगाना है, फिर ब्लेंड करना है। बस ऐसे ही करना होता है। ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करते समय हमें लेयर बाय लेयर वैल्यूज़ को गेन करना होता है, बट चारकोल में ऐसा नहीं होता है। चारकोल में हम फर्स्ट लेयर में ही डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। So guys, I hope you will definitely get the help from this video. If you like it, then like the video and do not forget to subscribe to my channel. So guys, I'll meet you with another helpful video, and till then keep learning.